In previous lecture, we have studied about area vector, electric flux. In electric flux, we have studied that the total flux passing through any surface area was equal to surface integral of electric field over that surface area. So today we are going to discuss Gauss theorem or Gauss law. Its statement is this surface integral of electric field E produced by any sources over any closed surface S enclosing a volume V in vacuum, that is total electric flux over the closed surface S in vacuum is 1 by epsilon naught times the total charge Q contained inside S. It is technically very difficult, but it is very easy. Simple. We have studied in our previous class that surface integral of any electric field over any surface E. Surface S was equal to the total flux passing through surface S. So this was our statement when we have studied electric flux. Surface integral of E over any surface S was equals to total flux passing through a surface S. And if you remember, this was written like this: surface integral E dot ds, the surface integration of इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी सरफेस एस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस इंटीग्रेट किया, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे सरफेस पे पूरे इंटीग्रेट करके एक वैल्यू निकाली, एंड दैट वाज इक्वल्स टू द electric flux passing through that surface phi E. So this was our previous statement, and in this statement the surface integral of electrostatic field E, whatever I have written here, produced by any surface over any closed surface S. So in here we are considering surface enclosing a volume V. अभी हम इसको भी देखेंगे क्या है, in vacuum, that is total electric flux over the closed surface. किसी भी, अब यहाँ वाले पे आप केवल ध्यान दीजिए, the total electric flux over the closed surface S in vacuum is only, here you have to learn, is 1 by epsilon naught times the total charge Q contained inside S. अब देखिए क्या है, आसानी से एक आसान भाषा में समझ लेते हैं. Here we have a closed surface, any closed surface, not exactly circular, any of the closed surface. It is three dimensional, not two dimensional. But for a ball, for a circle, for a sphere, we have a surface is that portion which we can touch. तो ये बाहर का जो सरफेस होता है, जो किसी स्फीयर के लिए आपने पढ़ा है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. सो दैट इज सरफेस. सो फॉर एनी क्लोज सरफेस इंक्लोजिंग एनी वॉल्यूम, ये जो सरफेस है अंदर इसने कोई एक वॉल्यूम इंक्लोज कर रखा है. सो इफ आई एम कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस होल सरफेस, if I say this whole surface value is S, means surface area is S for this whole surface, then we have to calculate this surface integral of electric field for this whole surface. So we have to integrate this E into ds for this whole surface, and this will calculate our total electric flux passing through this. Since हमने पढ़ा surface integral of E ओवर एनी सरफेस S क्या होता है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस. सो अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर से पास हो रहा है उसका सरफेस इंटीग्रल निकालें, देन इट
this theorem, what this theorem especially says, this surface integral what we have calculated will always be equals to 1 by epsilon naught times the total charge q contained inside S is always equals to 1 by epsilon naught times the total charge. अगर मैंने कहा इसके अंदर total q charge है, so this surface integral of this whole this whole electric field passing through this surface will be equals to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by this closed surface. तो हमें क्या करना है, एक सरफेस मिला, उसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें सरफेस इंटीग्रल लेना है जो कि असल में होता है टोटल फ्लक्स के कारण. वो किसके बराबर होगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 बाई एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट वही क्वांटिटी है, इट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्यू. सो ये है हमारा स्टेटमेंट, ठीक है. अब वी हैव टू प्रूव इट. फर्स्टली फॉर प्रूफ it especially says something, there is some statements which we have to learn also, that is there is no contribution to total electric flux from the charges outside. Outside charge does not contribute here, the only enclosed charge contribute here. Further, the location of q, q यहाँ रखा है, q यहाँ रखा है, q यहाँ रखा है, the location does not matter for when I am considering this, ठीक है. So q is the total charge enclosed by it and not the position of the charge enclosed by it. All right, so this is very important. Now the two things we have learned. First is the total flux is there is no contribution to total electric flux from the charges outside. If some charge is placed outside, it will not contribute here. And second, the position of q does not affect the total calculation of this electric flux. All right, now the surface chosen, now we will prove it, we will prove it. Consider a charge here, consider a charge q, if I say plus q is placed here. We have to calculate the flux through any surface enclosing this charge q. If I am say this, I have considered a Gaussian surface. What is Gaussian surface? We will learn it. मैंने q प्लस q चार्ज लिया था, उसके आसपास एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस माना, इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. This spherical Gaussian surface is the surface chosen to calculate the surface integral. Simply, this one is a Gaussian surface. Gaussian surface. The surface chosen to calculate the surface integral is called Gaussian surface. ऐसा सरफेस जिसको हम चूज करते हैं अपना सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए, उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं. ठीक है. सो प्लस क्यू एक चार्ज था, उसके लिए हमें अपना गॉस लॉ प्रूफ करना था. ठीक है. तो प्लस क्यू एक चार्ज लिया, उसके आसपास एक गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस लिया. अब हमने क्या किया, और ऐसा हमने लिया क्यों है अभी के लिए,
ये जो प्रूफ होगा ये स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस के लिए होगा, बाद में इसे जनरलाइज भी करेंगे, बट फिलहाल ये स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस के लिए। देखिए यहाँ हमने, चूंकि मैंने आपको बताया था, जैसे हमारा ये केस था, एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया था, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए स्फेरिकल होता तो मुझे इस पर्टिकुलर मैंने एक छोटा सा सरफेस इस तरह से मान लिया, ठीक है ना, ये यहाँ पे जैसे ये मान लिया एक छोटा सा सरफेस मान लिया, ठीक है, ये एक छोटा सा सरफेस है, ये एक स्फीयर है, ये जो मैंने बनाया है राउंड, ये सर्किल ना होकर ये एक स्फीयर है जिसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे कहीं पे प्लेस्ड है। अब चूंकि ये एक छोटा सा सरफेस मैंने उसके टॉप सरफेस में माना है, इस सरफेस को मैंने कह दिया ds। इस सरफेस का परपेंडिकुलर किधर होगा, किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे कोई छोटा सा पॉइंट भी ले लें तो उसके ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड ड्रॉ होगा, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि वो इसका कोई भी सरफेस हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर ऐसा बनाएगा। तो ये इस छोटे ds सरफेस का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इसीलिए हमने एरिया वेक्टर वहाँ पढ़ा था, दैट एरिया वेक्टर विल बी रेडियली आउटवर्ड एंड आई हैव रिटन इट एज n cap. So this is ds we require. Now we will calculate the electric field due to this plus q at this position. If I say this position is p, we will calculate this electric field at p due to plus q. You have studied about electric field due to a point charge, so we will see it. Now we can make it this figure again. This was plus q. I have taken one small surface and the surface area vector was this n cap. The area of this area element is ds. Alright, we have to calculate the electric field at this point, the point P, from here due to plus q. So this will be what? E is equals to field at P due to plus q charge will be, if I say E vector is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, if you remember the formula, 1 upon 4 pi epsilon naught for this plus q. So it's q by the distance, if I say radius is smaller, r square, but the direction will be, if I say this direction of this electric field will also be the line joining, they will also be along the line joining these two points P and this O center. If I say this direction is r cap, then the area, the direction of this electric field will be along this r cap. So 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square r cap. It is also outward. N cap will also be in this direction, radially outward, and r cap will also be in same direction, radially outward. Electric field is here, where r is unit vector directed from O to P. P. Now consider a small element ds, sphere around P. This we have considered this ds around this for ds at this P. Now this ds can be written as, ds vector can be written as ds multiplied by n cap. If you remember, this ds is the whole vector quantity area, this ds is magnitude, and n cap is the direction of this area vector. So it is clear. Now we will calculate the electric flux due to this area element. Electric flux over, firstly,
calculate electric flux over element ds only. If you remember, this flux was, if I say d phi e, flux was दिस ई वेक्टर जो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम कर रहा है, जो अभी मैंने निकाला, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ काम करेगा, ई वेक्टर काम कर रहा होगा। तो हमें क्या करना होता है, ई वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट लेना है दिस डी एस वेक्टर से। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ते वक्त पढ़ा था, दिस ई डॉट डी एस। ठीक है, फर्स्टली वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एलिमेंट डी एस। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ई वेक्टर जो वहाँ काम कर रहा है इस प्लस क्यू के कारण, and dot product of ds. So this will be E, put the value of E here, q upon 4 pi epsilon naught, and this unit vector r square, अगर आपको याद हो ये मैंने अभी अभी निकाला है, ये यही मैंने यहाँ पुट किया है। Now and the dot product of ds, what was this ds? ds we have taken this ds vector, we can write it like this, q upon 4 pi epsilon naught 1 by r square unit vector r dot ds and unit vector n cap. This ds is a magnitude, so we can take it here, 4 pi epsilon naught ds by r square, and this r vector dot n vector, r unit vector, n unit vector. See, r unit vector and n unit vector both are in same directions and both have magnitude 1. If you remember, a dot b, if a and b are parallel or having same direction, this will be a dot b is equals to ab, and if magnitude we are counting, then a into b. So r, magnitude of r is equals to 1 क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 and they both are parallel, so theta is equals to theta between these two is equals to 0 degree. So r dot n cap will be is equals to mod r cap mod n cap multiplied by cos theta. So mod r unit vector है तो 1 1 and cos 0 degree is also 1, so this will be 1. So r dot n cap will be 1. Now we will put it here, so this will be 1. So E, we can write d phi E is equals to E dot ds, and it is equals to a scalar quantity q upon 4 pi epsilon naught ds by r square. This is the flux for this small area element only, for this ds only. ये जो निकला फ्लक्स ये केवल उस एरिया एलिमेंट ds के लिए, इसके लिए, लेकिन अगर हमें पूरे सरफेस के लिए चाहिए, देन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस ds ओवर दिस होल सरफेस, सॉरी इंटीग्रेट दिस फ्लक्स ओवर दिस होल सरफेस. ऑलराइट, सो वी हैव टू calculate the integral of this flux over that complete Gaussian surface. So integral, or we say the total flux is equals to surface integral of this whole flux passing through this small area element d phi. So surface integral E dot ds, we can write it like this one, but E dot ds we have calculated here, this one is our E dot ds, put it here. Surface integral q upon 4 pi epsilon naught ds by r square. These three are not dependent on area, so we will take it outside. So total flux, if I say this is phi E passing through this whole Gaussian surface, will be q upon 4 pi, we will take it outside, 1 by r square we will take it outside. Surface integral will only be applied on the ds element. ये कुछ और नहीं है, ds का यानी छोटे छोटे जो हमने ds एलिमेंट लिए
ये जो यहाँ पे मैंने छोटा एक एलिमेंट ds लिया, इस तरह के खूब सारे एलिमेंट लेते जाओ, सबको जोड़ते जाओ. So since we have considered it as a Gaussian surface, a spherical Gaussian surface, then the total surface area will be 4 pi r square. Total surface area will be 4 pi r square, where r is the radius of this sphere. So we will see that this whole surface area will be equals to 4 pi r square, and this will be written again q by 4 pi epsilon naught and 1 by r square. See, r square and 4 pi is cancel out, and the result will be phi is equals to q by epsilon naught, just because 4 pi and 4 pi cancel out, r square cancel out. Or we can say surface integral of this E vector over this whole surface was equals to q by epsilon naught, and this was our statement for Gauss law. Alright, so this is the proof of Gauss law, but this is the case when only plus q charges is there. If I say multiple charges are there, q1, q2, and anywhere it is, anywhere, q2, q3, so this q will be written as q1 by epsilon naught plus q2 by epsilon naught plus q3 by epsilon naught, and so on, जितने भी हों. So if I say, I can write the summation of all charges, summation of all charges qi, and this qi having different signs also. मतलब अगर q1 plus 2 है, q3 minus 3 है, q4 plus 1 है, तो इनका एक अरिथमेटिक सम कैसा आएगा, प्लस माइनस वाले एडिशन करके रिजल्टेंट जो आएगा दैट विल बी यूज्ड इन समेशन क्यू आई, एंड दिस विल बी द टोटल सरफेस, और इट कैन बी रिटन एज द टोटल सरफेस, द टोटल इंटीग्रल of this electric field E over this surface S will be is equals to summation of all the charges divided by epsilon naught, and this was our statement for Gauss law. So this is all for Gauss law, and in next class we will see the deduction of Coulomb's law from the Gauss law.